Let me just see. Welcome back, guys. Okay, so I just wanted to see if it started or not. So it's again live stream, and it's going to be the test bench again. And let me just go back to Cherry Web. So it says that it's upcoming. Okay, so it's working. All right, fine. So welcome back, guys. Or let me just play some music for now. If I say YouTube, and if I say what is it? Copyright free music. Copyright free music. So it says that we're copyright free music, and I don't want to see that. And see as gaming music. Okay, so best of no copyright sounds. Okay, this one is good. So welcome back, guys. और आज की इस वीडियो में हम जो है वो कुछ अगेन नई चीज़ें जो अपनाएंगे फॉर द टाइम बिंग आई वुड से दैट के हमारा जो मेन काम है वो हो चुका हुआ है रिफ्रेश इट one sec let me see okay it's working okay so welcome back to another episode another stream and today today we're going to learn about जब कोई नया डिज़ाइन बनाते हैं मतलब कि रिस्पॉन्स बना लें रिस्पॉन्स में सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी दिखाएंगे अभी के लिए सिर्फ जो है वो बॉडी दिखाएंगे और मैंने लास्ट टाइम जी ये देखो लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी बात चेक ऊपर जाने तो ये आ गया हाँ तो इसमें हम जो चीज़ दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे ये एक रो होगी टैब्स की अगेन वही टैब्स हम यूज़ करेंगे बॉडी होगी कुकीज़ हेडर्स टेस्ट रिजल्ट्स सिक्योरिटी इसकी ज़रूरत नहीं है वी कैन जस्ट से कि हेड बॉडी और उसमें जो है वो हम जेसन में वो दिखा देंगे जो भी डाटा आएगा और 200 ओके कितना टाइम लिया और 1.5 1.25 के बी आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट टाइम हम लाजमी दिखाएंगे और 200 ओके भी दिखा देंगे तो चलो ये जो साथ में आइकन बना हुआ है ये भी दिखा देंगे so let's just create this one and then we will be okay to move on because हमारे पास तकरीबन हर एक चीज़ बन गई हुई है लेकिन इसमें जो है वो डाटा वगैरह पुट करेंगे सारा कुछ लेके चलेंगे साथ सो इट्स गोना बी जस्ट फाइन let's just create this response component for now and if I go back to dashboard and in dashboard I have this response component and let's just say components में test bench components and we have helpers also but in this one I would say response and in response I will create header डॉट jsx इस हेडर में असल में क्या आएगा इस हेडर में हेडर बनाने की ज़रूरत है ये वो दिखा देगा और वो चीज़ ये दिखा देगी या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि राइट हेडर आ जाएगा
RFCE आ जाएगा। और इसमें जो मेन होगा हमारा रिस्पॉन्स डॉट JSX RAFCE, और यहाँ पर हम कह देते हैं अगेन द सेम थिंग विल बी रिस्पॉन्स। सो इन डैशबोर्ड जहाँ पर हम ये चीज़ दिखा रहे थे, लेट्स जस्ट से कि अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखा दूँ तो हमारे पास सेम थिंग वही चीज़ जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगी। एंड नाउ इन रिस्पॉन्स लेट्स गो टू रिस्पॉन्स and create one tab, only one tab we need, and we can just copy and paste the tabs from here, just format it, we come over here, ये कॉपी हो गया और ये भी कॉपी कर लेंगे, ये भी कॉपी कर लेंगे। So in response I will just paste it over here. Okay, let's say this one man, okay, okay, move this one, come over here, and okay, so it says that I'm gonna refresh करूँ तो it says that import direct from, okay, I already have that, so I just need this one over here, and now we are seeing कि हमारे पास ये चीज़ आ गई। Now over here we'll say body, we don't have body, we only need one tab for now, तो इसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। And we don't need this one man, the only thing over here will be body, बॉडी आ गई और इसको हम बॉडी कर देंगे लाइक दिस। बट रादर देन कि हम इसको टेबल दिखाएं, we will show some kind of a JSON viewer. So in our ChatGPT response we got something last time के we got something के ये था हमारे पास वो JSON viewer, paste it over here, we will import it, and JSON data initialize JSON, so let's just copy this one and paste it over here. Okay, perfect. So if we come back, okay, so output JSON would be like this. Perfect. So rather than saying it's a output, I would just say see it. Okay, so this is the response that I got by sending the request. Okay, so body में ये चीज़ आ गई, and we will do one more thing, and which is UL था, I said, did I said flex? If I do flex, nothing is going to happen, but if I say justify between and items center, I will create one more, or I can just say right header. Okay, one sec. Let's see, what's the problem? Right header is not defined. Okay, now it's defined. Okay, so मैं right header में जाऊँगा, and if I say 200 ये आ गया, but we will have more than one. So if I go to API response, I had one icon, 200, okay, 11, and this one, and save an example. We don't need this. So 1, 2, 3, 4. I don't know about 4, because 4 is something के 1.25 KB. I don't understand 1.25 KB किस चीज़ का लिया, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आई विल ऑफ कोर्स मैं अभी के लिए सिर्फ
कुछ स्टैटिक डाटा बना रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू शो यू कि कुछ स्टैटिक डाटा बना के उसमें जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा असल में एक कलेक्शन क्रिएट से, और फिर वहाँ पर फ़ोल्डर्स बनाऊँगा। बल्कि इसका भी पहले एक हम एक बना लेंगे कि कलेक्शन के ऊपर मैं लाइक क्लिक करूँगा तो आई विल हैव सम फ़ोल्डर्स एज अ ड्रॉप डाउन, और उस ड्रॉप डाउन के ऊपर जैसे फ़ोल्डर होगा उसके ऊपर मैं हिट करूँगा तो मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट का नाम वगैरह होगा वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। इट डज़न्ट मैटर इफ़ इट्स post, request, patch, delete, it doesn't matter. But we will do this one. Okay. So let's just come back. Okay. So we will have one icon. Please do not don't. Okay. This was my mother, and she was trying to open the door. I knew she's gonna come. I didn't lock the door, and I knew she was gonna come. So I said, no, 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 no. Okay, dunya, world. All right, so I would say flex items, baby sender, and gap 2, maybe 3. I will have one icon over here, and let's see. Okay, so I got the dunya, and ये दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी महज एक धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है. So we will have 201. Okay, so I will create one more div. I will say 200. Okay, and then we will have some seconds. I will create one more div or span or something, I don't know. So I will say 11.7 ms. Perfect. And 1.25 kb, I don't even know कि ये क्या है. So let's just say कि class name text green. Okay, good. 500. 500 is good. Or I can just copy and paste the thing from here. You are seeing a average developer doing coding. You are seeing, you're watching, or watching. You're watching a average developer doing coding. I have not prepared any of this in my life before. It's just a simple core skills, you can say, कि चीज़ों को करने के लिए. It's simple, it's very simple, it's very what to say, real, never done this before in my life. मुझे कभी नहीं पता कि लाइक 200 होके मैं किस तरह लेके आऊँगा, आई डोंट नो. मेरे ख्याल से जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और उस रिक्वेस्ट में से जब मुझे डाटा आएगा तो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, और उसका जो भी टाइम होगा वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा. तो हाँ, 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 हाँ. और दूसरी बात ये कि जब अच्छा, मुझे ये चीज़ें सेव भी करवानी पड़ेंगी. आई थिंक सो मुझे सेव करवानी, बिकॉज इन पोस्टमैन और इन एनी वेयर इफ़ यू गो, वैसे तो कैशे से वो उठा रहा होता है, लेकिन जब मैं किसी रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर तो वो एक नई रिक्वेस्ट है तो वो खाली आएगा सारा कुछ, लेकिन अगर वो एक नई रिक्वेस्ट नहीं है तो वो आएगा, क्या से कहते हैं. ओके, सो इफ़ आई रिमूव दिस, ऑल ऑफ दिस, हाँ ये ऐसे ही रहेगा. लेकिन इसमें एक मसला है, मतलब वो नहीं आ रहा, वो जो आता होता है. लाइक यू कैन जस्ट क्रिएट इट ओवर हियर, और आप यहाँ पे जेसन अपन पास कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं इसको और भी अच्छा बेहतर करूँगा. इट्स फाइन. इफ़ आई रिफ्रेश इट, सो इट्स गोना कम बैक. ओके, सो 11 ms इसने वो लिया, और लेट्स जस्ट से कि मैं फिल नन लिखा हुआ है, अगर मैं फिल ये कर दूँ, नाउ फाइन, ये वो लेगा नहीं. सी RGBA टेक्स्ट ओपेसिटी ये बन रहा है, #22C55E, #22C55E. Oh, okay. Front color maybe, I think so. You need to put this one.
and I need to remove this one like this. Okay. Or I can say will white. White काम नहीं कर रहा. It's fine. I can just say this one. We like it. Okay. So fill for example अभी के लिए हम कर देते हैं none. Fine. तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी. ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा. वी कैन कॉपी द रिस्पॉन्स, वी कैन सेंड द रिस्पॉन्स, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो. लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, एक चीज़ दिखाऊं, बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊं, बड़ी मज़े की. चेक करना है, बस चेक करना. इफ़ आई से मोबाइल रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना भाई कि कैसे चल रही होती है. ओके. ए ओके, वो उस तरह चला गया. वो 1 सेकंड. सो ये इस तरह चला गया, वो चला गया, उसने वो रिमूव कर दिया, और ये चीज़ इस तरह आ गई. इवन दो इट शुड नॉट बी हैपनिंग लाइक दिस, बट आई डोंट रियली केयर कि रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह चल रही है, किस तरह नहीं चल रही. I just wanted to do this in a web for right now, and then when everything is dynamic, then I will do the responsiveness, because then you know कि किस तरह जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं. My convention is this: okay, when you are developing something and when you are coding and when you are like developing a web application, my convention is this. लेकिन हर किसी की everyone has a different choice, everyone has different methods, and everyone has different opinion. But what I do is that I create everything on a web, on a like this one, as you see, as you can see, it's perfect now on the website. Oh, sorry, on a web page. But if you responsive it, it will break, of course. But my convention or my methods are like this: that you dynamic everything, you create what you want to create, and then after that you responsive it. Because when you are responsive, when you are doing some responsiveness, you change some classes. If I do this right now, if I do the responsiveness now, I will create some of the changes. I will create some of the classes. I will like change some of the classes. But when I will dynamic, I need to put data. I need to put the dynamic data. Then I wouldn't know where to put the dynamic data. Where what is the main div? What is the that div? What is that div? So uh, by preventing those changes, I do the dynamic first, and then I do the responsiveness, because always the dynamic part is the first. Responsive part is something that you can do or you cannot do, because this is not something that I'm going to. This is not some official project. It's for my learning and it's for you guys. So I just do something that I really like. So what I do is that first the dynamic part and then the responsiveness. I don't really like this one. I don't think so. I like this one. But anyways, for the time being, let's just go with it. Or I can just say height full and it's gonna come down, and then these input will have a lot of space between them. I don't know. In a list, it's fine. I don't really care. So okay, so let's just say कि अब हम आ जाते हैं साइड बार पे. अब साइड बार पे थोड़ा सा आएगा इशू, क्योंकि हम क्रिएट करेंगे फोल्डर, और फोल्डर से जो है वो डाटा आएगा हमारे पास. ओके, लेट्स जस्ट मूव दिस वन. होगा कैसे ये? होगा ये ऐसे के, होगा ये ऐसे के, फर्स्ट द ये, and then the create collection. Okay, let's go to sidebar. Sidebar, in sidebar, open this one. We have create collection, and let's just say man, oh man. We also have this as a button, but I want to do this as a drop down. And when I open it, products billing, or okay, okay,
say perfect. And let's just go to the hero icons, and I'll say uh, I would say create this one is good. So rather than having this one, I would say this one, and say plus, or I will go back to hero icons, and if I copy this one, what's it gonna be, baby? What's it gonna be? Okay, so it's saying plus. This one is good. Okay, so I don't have to change the size and things like that, so it's fine for now. And now we can like, okay, so one thing I can do is that I would say place holder set. Equals. Okay, good. So for the timing, I just want to see, because if I copy this over here too, if I over two, or I can just remove these allies and one ally is enough, or I can just put it like for the timing, I will remove this one, and by clicking on this button, I will say open that. So if I say something like on click set open collection true, now set yeah, fine, uh, use state, first import it, and then use this one, open collection false. I will come down here, and I will format it. I will say open oh man, yeah, open collection and do this one. Okay, let's remove this hidden. So I have this one. So set open collection, I set true for the first time, it will be false. uh, सेट ओपन कलेक्शन का जो भी ऑपोजिट है
why it's not, could not find name open collection. Okay, my mistake, sorry. Okay, so if I open it, if I close it, if I open it, if I close it, if I open it, if I close it, and let me just give names. I did this one. Let's just say post, auth, and events. If I open it, I will have post, events, and one more thing, ms3, ms1. Oh no, not this one. This one is good, but in a UL, it's why it's so PL11. I think this is the reason. PL4, PL5, good. Because I don't want a lot of space. क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा देन जो रिक्वेस्ट होंगी वो कुछ इस तरह यहाँ पे नज़र आएंगी. आई डोंट वांट टू लाइक डू समथिंग के वो जो है वो बिल्कुल ही फारिग हो जाए. अगर वो फॉर एग्जांपल मेरे फोल्डर यहाँ पे ओपन हो रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट कुछ यहाँ पे करके ओपन होगी तो मतलब मुझे स्पेस चाहिए होगी थोड़ी सी. So that's why let's just go with this one, and you can just put it in one span, and I will say ML1. Sorry, ML1. So this is good. I will just copy this one, paste it over here, and I will say both. Copy this one, paste it over here. I will say posts. Okay, so now it's good. Now if I open this one, I will get some requests, और इस तरह जो है वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो चल रही होंगी. सो आई वांट टू डू दिस डायनामिक, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए तो चलो मैं ये ओपन कर रहा हूँ. बाद में मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि रिक्वेस्ट का कंपोनेंट होगा, और आई वुड हैव टू डू द सेम थिंग ऑन दीज पोस्ट और दीज फोल्डर्स टू. क्योंकि असल में होगा ये कुछ इस तरह कि ये सारा कुछ यहीं पर मर्ज होगा. ज़रूरी नहीं है कि कलेक्शन के अंदर पोस्ट हो एंड देन पोस्ट के अंदर ही रिक्वेस्ट हो. मैं बाहर भी रिक्वेस्ट बना सकता हूँ. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड आई से कि भाई जी एक रिक्वेस्ट क्रिएट करो, वो बाहर आके अपेंड हो जाएगी वो वाली जो भी रिक्वेस्ट होगी. या तो फिर ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे कहे कि भाई जी यू हैव टू क्रिएट अ collection, you have to create a folder, and then you have to create a request in it, then you can do the request on it. But in Postman or Insomnia you don't have that kind of a choice. You can do whatever you want. Like you also have some requests which are merged, and जो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो is fine. But what if I prevent user to create a request openly? I'll just say open, create collection. In this collection, यहाँ पर मैं एक दे दूँगा now it's going interesting. Now it's becoming interesting. Okay, so what I should do? What should I do? What should I do, man? What should I do? What should I do, man? For the time being, let's just say if I open it or click on this modal, click on this, it should open a modal, and when it opens a modal, I will say create collection, create folder, or create request. So
what I do is that it's very openly that मैं भी जब लाइक यूज़ करता हूँ ना पोस्टमैन या इंसोमनिया वगैरह, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक कलेक्शन बनाऊँ और उसके अंदर मैं एक मैं बनाऊँ उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, फ़ोल्डर बनाऊँ उस कलेक्शन के अंदर, जितने भी फ़ोल्डर मैंने बनाने हैं, एंड देन उसके बाद मैं उसके अंदर रिक्वेस्ट बनाऊँ। मतलब जब मेन चीज़ है ना वो ये है। लेकिन दूसरे जो जितने भी हैं वो इस चीज़ को कहते नहीं हैं कि भाई नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा या ये वो। जल्दी जल्दी टेस्ट करने के लिए आप एक ही रिक्वेस्ट को बार बार यूज़ कर लेते हो, सो यू कैन डू दैट। बट यहाँ पर मैं क्या करूँ, it would say it will open up a dial, it will say create collection, create folder, and then create request. फर्स्ट लेट्स सी कोई मॉडल देखते हैं। Laravel CSS modal. This one is good. Let's just, we only need this one. This one. I will create one more component in our response, in our sidebar. Sidebar बाहर ही रखा हुआ मैंने. Fine. I'll say sidebar. This one will say कि मुझे वो नहीं मिला, कोई मसला नहीं. Go to dashboard. La 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 la. इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लाइक. ओके, so this plus icon will have one on click. Open modal. Oh, set open modal true, and open modal false हो जाएगा. और इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स में मैं बनाऊंगा modal.jsx. सिंपली यहाँ पर आकर मैं इसको कॉपी करूँगा और इस जगह पे पेस्ट करूँगा. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, and the class name should be this, and oh ये क्या है? Okay, method and hidden name. Now I will go back to sidebar. I will just do something over here. I will say or will say कि ये चीज़ है. I will say open modal and modal this one. Set open modal true. Okay, modal में hidden कहीं और तो नहीं लगा हुआ. Let's see, hidden area hidden true.
see what's the problem over here. I'd say open modal है, set open modal ट्रू कर दो ऑन क्लिक पे और modal दिखा दो। और modal मैंने मंगवाया कंपोनेंट्स में से modal। ओके सो इज दिस ओके वन सेक। एक है modal, ओके एक है कंपोनेंट्स में से modal मंगवा रहा है। Oh, I already had modal by the way, but I wanna use this one. Let's see. Okay, 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 okay. Okay, one thing that we can do और वो ये है कि प्रोफाइल में एडिट में अपडेट प्रोफाइल पार्शल में ये चीज़ गई, अपडेट पासवर्ड और ऑन सबमिट ये चीज़ की, लेकिन अपडेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में मैंने वो देखना है जहाँ से वो मोडाल को कॉल कर रहा है, ये करना है मेरे ख्याल। नहीं ये नहीं है, डिलीट यूज़र फॉर्म, आई थिंक दिस इज़ द वन। हाँ ये क्लॉज मोडाल सेट, ये क्लियर एरर रीसेट कर रहा है मोडाल, ये रहा शो कन्फर्मेशन मोडाल ऑन क्लोज, क्लोज मोडाल, और उस मोडाल में सारा कंटेंट जो भी उसने लिखना था वो लिखा हुआ है। एंड हाँ ठीक है ये। और क्लोज मोडाल में उसने एक मेथड दिया, ऑन सक्सेस पे क्लोज मोडाल, ऑन एरर पे पासवर्ड डॉट इनपुट डॉट फोकस, ऑन फिनिश पे रीसेट। और ये सारा उसने यूज़ फॉर्म से मंगवाया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कंफर्मिंग यूज़। अच्छा ये क्लोज मोडाल, ये एक स्टेट उसने सेट, ये स्टेट बनाई उसने। ओके वी कैन डू दिस, वी कैन ऑल्सो डू दिस, बट अगेन वी हैव टू राइट आवर ओन कंटेंट। ओके फाइन, वी डोंट रियली नीड दिस वन, लेट्स जस्ट मंगवाओ इसको कहाँ से, अपना बनाने की क्या ज़रूरत है। एंड वी विल से मोडाल, और the thing is that I don't want to write here. Fine, no worries. शो हो जाएगा हमारा ओपन मोडाल, और यहाँ पर ओपन मोडाल था, और उसके बाद ऑन क्लोज पे आप क्या करना चाह रहे हो, तो ऑन क्लोज पे एक मेथड पास किया हुआ उसने, ऑन क्लोज पे हम सिंपली एक और मेथड पास कर देंगे। साइड बार में आएंगे तो से ऑन क्लोज सेट ओपन मोडाल, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझे ज़रूरत नहीं। एंड इफ़ आई से सम टेक्स्ट ओवर हियर, नाउ लेट्स सी। मोडाल इज़ नॉट ओके, कंपोनेंट्स में से, कंपोनेंट्स में से मोडाल मंगवाया, या देयर यू गो, वी गॉट सम टेक्स्ट। डिड यू मीन ये किस जगह के ऊपर, प्राइमरी बटन में? नहीं यार ऐसे तो है क्या है यार। अच्छा ये लास्ट, और इसके अलावा ये है रिस्पॉन्स, हाँ मुझे मालूम था इधर तो होना ही था। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स JSX में मैंने असल में ना वो ला के रखे थे ना, रिस्पॉन्स हेडर,
रिस्पॉन्स हेडर और यहाँ पर क्लास ये रही class name and I think we should be good if anyone else has the stroke with oh my god and oh, okay I have to do this will be stroke with this is stroke and this is fine this would be line and this would be cap and this would be L capital J capital and one else response क्लास नेम अभी यहाँ पर भी अभी भी क्लास नेम थोड़ा सा चाहिए रिस्पॉन्स में मैंने सिर्फ ये लगाया था जेसन व्यूअर ये था लेट मी ओपन दिस वन एंड लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है man oh man okay so this one response stroke line join अच्छा ओके फाइन मैंने गलत लिखा एंड इट विल से द सेम थिंग स्ट्रोक लाइन कैप है इट्स नॉट सी बटा नहीं है एंड स्ट्रोक विथ प्राइमरी बटन में लेट्स गो टू रिस्पॉन्स एंड वन सेक ये है प्राइमरी बटन ओके sidebar primary button okay so it's not stroke it's like this and touchpad sidebar mein we again have one more thing okay so I knew this one yeah okay. Let's say this stroke line join बस 3 ही थे यार इसके अलावा तो ये क्या क्या अच्छा सॉरी let me just remove these ones we don't need this अब अभी भी है यार अभी माय गॉड मैन प्लेस होल्डर डिड यू मीन प्लेस होल्डर ओके मुझे अच्छा ठीक है यार मर्जी है यार अब मैं क्या कर सकता हूँ दिस वन एंड we had this stroke line cap ये असल में ये वाली है stroke line okay alright so we had this some text आ गया यहाँ पर और इस पॉइंट पे हम ये हमारा मोडाल हो गया और अब मुझे इस मोडाल की ज़रूरत ज़रा सी भी नहीं है बिकॉज आई थॉट कि मुझे मिल जाएगा लेकिन मुझे नहीं मिल गया था मतलब ऑलरेडी पड़ा हुआ था ओके सो वी हैव सम टेक्स्ट अब इस सम टेक्स्ट में हम जो है वो क्या करेंगे ये चीज़ हो सकती है कि मैं कलेक्शन दूं और उसके अंदर कहूँगा भाई आपको फोल्डर एक कम से कम एक फ़ोल्डर तो आपको बनाना पड़ेगा ये चीज़ हो सकती है हाँ एक फ़ोल्डर मैं उसे कह दूं कि आपको बनाना पड़ेगा ये मैं उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता लेकिन फिर जब वो फोल्डर में आएगा तो फोल्डर में आके जब वो क्लिक करेगा तो सेंड जब वो सेंड भी करने लगेगा तो मैं चेक करूँगा इसको कोई फ़ोल्डर है और यार ये मसला है ना असल में नहीं वो अगर करना चाहता है ना तो वो करे कोई मसला नहीं है रिक्वेस्ट सेंड करे और उसका रिस्पॉन्स आए वो देखिए जो मर्ज़ी करे इज़ फाइन वो उसको ज्वाइन करे या ना करे हाँ तभी होगा जब वो करेगा कि मैं अब रिक्वेस्ट बनाना चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट बनाऊँगा रिक्वेस्ट बनाएगा दैन उसके अंदर पुट करेगा दैन जो रिक्वेस्ट जाएगी तो हम उसके साथ रिक्वेस्ट की आईडी भेज देंगे और हाँ
सिंपली जो करेगा वो तो उसमें सिंपली जाने देंगे, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहता है, ओके। साइड बार में ये चीज़ आ गई। अब ये कंपोनेंट आएगा, साइड बार के कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, क्रिएट कलेक्शन एंड फोल्डर। फाइन, ये ठीक है। नेम मतलब मुझे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा अजीब सा है, बट इट्स फाइन, नो वरीज। Okay, so we have this one, copy and paste, key value. One sec. I go to my profile. You can see we have this update password. So delete account में ये चीज़ आ गई. We can just copy this one. Okay. Let's go to update password है ना ये. Okay, password transition. This one, this one, this one, this one. We can just class name आया यहाँ से, header, फॉर्म, और चलो पूरा सेक्शन ही उठा लेते हैं. वी डोंट नीड दिस क्लास नेम. और यहाँ पर आएंगे हम और सेक्शन यहाँ पर रिमूव कर देंगे. वी डोंट रियली नीड दिस वन. सॉरी माय मिस्टेक. वी डोंट रियली नीड दिस वन. अपडेट पासवर्ड और विल से क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन. भाई चले जाओ. ओए ओए. give, give me one sec. Give me one sec. Oh man, oh man.
Okay, so welcome back. It was my mother. All right. So create collection and let's say this system is not like others. You have to be very nice, able to so must have okay. So perfect now. Let's go to dashboard. Say this one. Okay. It's going to be okay. So we don't have on submit for right now. Perfect. We don't have ref. Let's do this one. We don't have this. We don't have this. One thing. We don't have this. So it okay. So we also do not have this. First, we will import the input label, text input error, and again we're gonna do the same thing over here. We don't. Okay, so I can just do this one and this one. I can do this. I can do this. We need to import primary button to disabled processing. We can do this. Transition show. We need to import the transition to and name saved and create collection and form and everything is good to go. Okay, so let me just now refresh it and I'm not seeing anything. Let's go to sidebar. I didn't call that create collection and folder. Okay, perfect. एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी वो ये है कि if I click on outside of the div, it's not letting me do anything. Like it should close the window and let me just go over here and in section let's just say okay, I have a p3. Okay, current password and this one p4. Okay, and now the main thing is that the value will be, we'll say collection name, type text, class name autocomplete, current password. No, I don't need this one. We can say placeholder, enter collection name. Nice. This is not an email, by the way. This is a name. So it's saying me give me the email, but it's not an email right now. Okay, so come over here and now we will have something. It's okay. So its ID will be this one, collection name, and come over here. So we have new password collection का name है and that's it. और उसके बाद collection का name है, name के बाद भाईजान folder है. So we will say we will copy the same thing from here and to here, and we will say it's not a collection name now, it's a folder name.
folder name, folder name, folder. Okay, and folder का name हो गया, and I think that's it. Do we have anything else in folder? No, it's a name, and that's it. Okay, so we don't really need this one. We can just do this. So it's perfect now. Perfect, perfect, perfect. And one more thing that I want to do is that if I go to toaster react, तो यहाँ पर एक चीज़ थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. आई रियली लाइक. नहीं, ये वो नहीं. No, it's not that. No. React hot toast. Make me a toast. Yeah, this is the one. This is the one, man. Okay, so I will come over here. PNP. I don't have PNP. I have NPM. So I'll say. Okay, and you can just do this import toast and notify app and then toaster on click make me a toast notify toast and this one. Okay, so it's installing right now, but I really like this one. मुझे मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है. ये वाला is your toast. Okay, so make me a toast. I really like this one, man. So lightweight and so good. Adder, aha, promise. Okay, got it. And okay, emoji. I don't know. Dark mode. CSS. Theme. Don't put it. Even CSS. Yeah, it's fine. Top left. Okay, fine, good. Toggle direction. Okay. Uh, toast made on this website so far. 163. What? Toasts made on. अच्छा, मैंने बनाया है तो. Okay, so if I say no, no, it's fine. Yan, ye, wo, toast, call it from anywhere. Add it to your app and call it from anywhere. Okay, fine. I will do that. Let's go to GitHub and we had this. इसने कहा कि ये चीज़ कर दो and then okay. So what if I do this? I don't have to use toaster and I just want to do this. So let me go to it's installed. Perfect. Let's go to app.jsx. I will just import it over here and like this. And what if on sidebar in create collection on this primary button I say this or yeah fine I say this but in toast I'll say hello. It's a form and e.prevent.default. What was the name के चलो कोई नहीं खैर है मैं सिर्फ टेस्ट ही करना है so I can say button this one get the same thing from here to here. Okay. Let's say this it didn't work. React toast यहाँ से आया it did not work and okay let me just go with this one. Oh, okay, so I need to do this toaster. Okay, so I will just copy and paste the thing from here. I will do this here. I will import the toaster at the end like this and oh it came. Okay, so notify
बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये तो साथ नीचे जाई जा रहा है। ला 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 ला। सक्सेस का कोड क्या? ओके, सो टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस say nice, but I don't want it here, I want it somewhere before, so doesn't matter, we'll do it. Okay, so okay, तो अब हमने क्या करना है? अब बाबा जी हम एक काम करते हैं और वो ये है कि यूज़ फॉर्म का यूज़ करते हैं, कलेक्शन का नेम लेते हैं, फोल्डर का नेम लेते हैं और उसको सेव करवाते हैं, देन वी विल डू दिस। तो वी विल जस्ट गो टू अपडेट पासवर्ड और यहाँ पर हमारे पास ये यूज स्टेट आई, इसमें डाटा सेट डाटा एरर्स पुट रीसेट प्रोसेसिंग रिसेंटली सक्सेसफुल यूज फॉर्म एंड जस्ट कॉपी दिस वन, क्रिएट एन कलेक्शन एंड यूज इट ओवर हियर। यूज फॉर्म हमें जो है वो इनर्शिया से मिल जाएगा, we will have all of these things, but for right now we will have collection name and folder name, collection name, folder name. Okay, and now we can do something like this: current password input. Now we don't need this ref. Data dot collection name, fine, collection name e dot target dot value. We can also do this one, and we can also do this one. We don't need this ref. Data dot folder name e dot target dot value, and we can do this one too. We can do this one too. We can do, yeah, fine. Recently successful अगर आया तो save दिखा दो वरना ना दिखाओ. So if I open it, I get the same thing. If I save it, I didn't get anything. Okay, so on submit, where is the own password? So on submit update password, we will copy the same thing, paste it over here. Let me just do this one. Okay, so update password. Okay, so update password route would be the update dot password, this one, on success reset, on error errors dot password अगर है तो ये कर दो, ये कर दो, password dot input dot focus कर दो, errors अगर हैं तो ये चीज़ कर दो, ये चीज़ कर दो. Okay, so we'll say create collection and folder. on submit में हमारे पास ये चीज़ चल जाएगी, and e dot prevent dot default. Okay, put its not put its post. Let me just okay, so let's say post, and the route would be web.php, and let's create ours. I will say route post create collection folder. I will say collection controller create collection and folder. Name will be collections dot create. We will create PHP artisan make controller collection controller. Fine. We will import it like that. Copy the name over here.
select function. It's not a void, but okay. So first of all, we will just tt the request all. Fine. I don't need this one, no need this one, not this one, not this one, not this one, not this one, this one only. So okay. So we have collection name, we have folder name, and we need to put the route, which was collections dot create preserves called true on success reset errors if I have error dot collection name, then reset the this one and password dot. Okay, so this is what they were doing. By the way, we don't need to have this. We just say log error. तो ये असल में मसला ये है कि ये जो कर रहे थे ना, वो रेफ वगैरह जो बनाए हुए थे, तो ये असल में अगर तो पासवर्ड सही नहीं है या कोई मसला है तो उसको सिर्फ फोकस करवा रहे थे। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने फोकस करा क्या एक नई चीज़ क्रिएट हो रही है, कोई अपडेट नहीं हो रहा, कुछ भी इस तरह कुछ नहीं हो रहा। सो इट्स जस्ट अ न्यू थिंग, इट्स फाइन। So we can just do this and we can come over here. We'll say test bench pause. Okay, so we got a test bench and pause. Perfect. Over here, we'll say request validate. I don't know. Let's just do that. Let's see convention. Let's PHP artisan make request store collection request, and in this one we will have say true. Let's say collection required. Fine. And one more thing. Folder underscore name required underscore name required. So for the time being, I mean, eh, fine, doesn't matter. So I will say store collection request. Already need, but पढ़ी जाने दो चलो. I will say collection create name request से जो collection name आ रहा है उसको create कर दो भाईजान. App models, go to collection, we'll say protected fillables, able होता है fillable होता है name. Fine. And this will be our collection. Perfect. And now we'll say folder create name
request से जो folder name and collection ID collection key. I think so कि यही सीन है. If I go back to my create folder, so we have, okay, so we also have user ID. In collection we also have user ID, right? Create collection में भी ID है, name है, description है. Okay, so we also have description. Let's just put something, one more thing in our collection name, and then we will be adding one sec. This one, collection name, collection description, and then we have folder name, and okay, just which is optional, of course, like this. Say collection name, collection description, and by this one should be collection description, and then we'll also say optional, and we'll say this is not this would be a text area. uh, 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 same but different. Fine. Okay, so we will be also getting description. Description is something that which is nullable, so we don't have to do this in our request, but we can do something like this. Which is nullable. Rather than कि मैं उसको लिखूँ ही ना, I think कि लिखना चाहिए collection description. So ID, name, description, user ID, constraint, cascade entity. So over here, we'll say description request से जो collection description आ रही है and user ID
will be all. Fine. और you can also like मैं एक ही लाइन में कर दिया सारा, but if you want you can do something different. And let's just do one more thing over here, which would be the user ID, and user ID will be the same. वैसे तो फोल्डर के अंदर यूज़र आईडी डालें, हाँ ये भी है, चलो। मैंने तब इस तरह बनाया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज़र है वो कलेक्शन नहीं बना रहा, वो सिर्फ फोल्डर बना रहा है, फोल्डर ही बनाई जा रहा है, कलेक्शन नहीं बना रहा, तो अभी के लिए तो चलो मैंने उसको प्रिवेंट कर दिया है। लेकिन ये है कि आई डोंट नो, करेंगे इसको, देखेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। कलेक्शन नेम, कलेक्शन दिस वन, यार इस पर भी चलो बंदा लिख ही देता है यार, क्या हो प्लेस होल्डर या फिर वैल्यू, क्या क्या लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर होता है इसमें, इंटर डिस्क्रिप्शन अबाउट अबाउट कलेक्शन, सही है, कोई नहीं रोला इतना। ओके, so let's see what happens now. So on success मैंने किया हुआ है, मैंने रिटर्न कुछ करना है, वापसी पे कुछ आए या ना आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वापसी पे फोल्डर आए, सॉरी कलेक्शन आए, कलेक्शन के साथ उसका जो फोल्डर बना हुआ है वो आए। जब मैं इसको बंद करूँगा और फिर मैं ये जो डाटा होगा, असल में मैं इसको बंद करूँ, इसको बंद करूँ, इसको बंद करूँ, और असल में एक क्रिएट कलेक्शन मेरे पास कॉल हो रहा है साइड बार में, राइट। यहाँ पर, यहाँ से वो मेटा डाटा लूँ, वो मैं डाटा यहाँ से पकड़ के आ, इसके ऊपर लगाऊँ मैं फॉर ईच लूप कलेक्शन। हाँ, ये जो कलेक्शन है, काम यहाँ पर कलेक्शन का नाम आ जाए, और डिस्क्रिप्शन खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैं उसको दिखाऊंगा भी कहाँ पर। सो इट्स समथिंग दैट। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि इफ़ दे क्लिक ऑन कलेक्शन, लाइक आई विल मेक इट एज अ अगेन द मॉडल और समथिंग, अगर वो इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन वो लाइक कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, सो देन वी विल शो के देर इज़ अ collection name, collection description, and then I will show the folders कि इसमें इतने folders हैं, और इसमें request total number of folders and total number of requests, and maybe the folders name but total number of requests मुझे दिखा दूँ। I can also show, yeah, in a tree structure I can also show folder in a जो भी request होंगी उसके अंदर वो दिखा दूंगा, and if they click on a request they will go back to that request, सब कुछ बंद हो जाएगा। So I can like मिठा जितना पा सकता हूँ मैं पा दूंगा। बट एक चीज़ मुझे जो बहुत बुरी लग रही है वो ये है कि मैं जब इधर उधर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, लाइक ऐसा तो होना चाहिए। गो टू दिस मॉडल, इन्होंने कुछ इस तरह का किया। अच्छा, ऐसे अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं, बंद हो यार, रिफ्रेश करना पड़ता है यार मुझे, व्हाट इज दिस मैन। हाँ, देखा, इधर उधर क्लिक करने पे कुछ होता है भाई। डिलीट यूज़र फॉर्म, इसने क्या किया है, डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, ऑन सबमिट, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज के ऊपर सेट कंफर्मेशन यूज़र डिलीशन फॉल्स, क्लियर एरर्स एंड रीसेट। ओके, इन्होंने ये चीज़ की है, तो व्हाट इफ़ आई डू द सेम थिंग, मे बी बिकॉज आई थिंक सो कि दे आर हैंडलिंग बिहाइंड द सीन्स के इसको कैसे किया जाए। लेट मी सी,
ऑन क्लोज में डायलॉग शो एंड लीव ड्यूरेशन 200 एंड चिल्ड्रन में चिल्ड्रन आ गया. I don't think so they are doing it, but I wanna do this. I wanna see this. I wanna check this. So on close, I would say on close, and I would say on uh, const on close. I just want to. I just wanna na na are है. अच्छा यहाँ पर नहीं, सॉरी. ओह लेकिन मुझे पास हो गया. हाँ ठीक है, fine. It's a method, so I can pass it from here too. Okay, like this one on close. One sec. मैंने मोडाल में पास किया ना on close, ठीक है. On close, on close. और if it's मेथड है ना, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल ऑन क्लोज के ऊपर सिर्फ यही लगा दूँ, सेट ओपन कलेक्शन फॉल. What they gonna do now? Let's see over here. Ah, close modal is not defined. Close modal is not defined. Create collection and folder. Okay, I did a mistake. नहीं अभी भी नहीं हो रहा. Okay. But if I don't do this, just pass a method. Close. Uh, it's the same thing, man. नहीं नहीं अभी भी नहीं हो रहा. If I click anywhere, mouse event mouse input source is WC use point or pointer type instead. मैं इधर उधर क्लिक करूँ तो बंद हो जाए भाई. ये देखो ना, मुझे अभी रिफ्रेश करना पड़ा है. या फिर ये है कि मैं क्लोज का बटन दे दूँ, क्लोज कर दो, ये भी सही है. लेकिन मैं इधर उधर क्लिक करने पे ओ ये देखो ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, कैंसिल पे क्लिक करूँ, बंद हो जाता है. इधर उधर क्लिक करूँ तभी बंद हो जाता है. ये मसला है ना यार. ये देखो ना, ये चीज़ गलत है ना यार. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार. कैंसिल पे वो क्या कर रहा है, ऑन क्लिक क्लोज मोडाल, और ऑन क्लोज पे क्लोज मोडाल. ओके, वन सेक, लेट मी सी क्लोज मोडाल, क्लोज मोडाल, ये चीज़. और रे एरी ना रे ना रा रे नी ना नी ना, नहीं हो रहा. ओके, एंड व्हाट इफ नाउ के अब मैं पास करने की कोशिश करूँ.
यहाँ से अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि आई विल क्लिक ऑन द कैंसिल बटन। और लेकिन यार मसला है ना भाईजान, मसला है ना भाईजान, ऑन क्लोज क्लोज चिल्ड्रन में क्लोजेबल ट्रू आ रहा है, मैक्स विथ टू एक्सेल आ रही है, ऑन क्लोज एज अ मेथड आ रहा है, क्लोज इफ क्लोजेबल ट्रू, ऑन क्लोज और ऑन क्लोज क्लोज। मैन ओ मैन, ऑन क्लोज क्लोज में डाल, ऑन क्लोज क्लोज में डाल, सिंपल। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हाउ दे आर हैंडलिंग दिस, के इफ़ यू क्लिक ऑन आउटसाइड ऑफ द मोडाल और वो फिर भी लाइक आपको जाने दे, लाइक क्लोज कर दे मोडाल ना। तो ये मैं चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्होंने कहाँ की हुई है। बट एनीवेज लेट्स जस्ट से कि मैं अभी के लिए चलो पास कैसे करते होते हैं मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। हाउ टू पास अ मेथड फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट, ओके। Or we don't have to do that. I will just pass the value and then I will close it from here. Okay, so on click, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ऑन क्लिक क्लोज मडाल, और यहाँ से मैं ये चीज़ जो पास कर रहा हूँ, ये जो चीज़ पास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सेट ओपन कलेक्शन सेट ओपन मॉडल पास कर दूंगा। सेट ओपन, ये चीज़ हो जाएगी ऐसे, यहाँ से मैं इसको पकड़ लूँगा ऐसे, और यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर दूँगा ऐसे। बट ये देखो ना, ये विद ट्रांजिशन तो नहीं ना हो रहा, बंद हो रहा है बस, पता नहीं यार। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया हुआ है उस्ताद ये मजे का काम किया हुआ है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं ना यार, तेरा वेट लेके जा यार। ओके, आई कैन डू वन, ये पिए लगाई जो बात, ये पिए लगाई जो अवल से ही, जैसे कि मैं इसको इस तरह करता हूँ। 1000 था, 880 कर दे, एक्सेप्टेबल, फाइन। ट्रांजिशन भी करेंगे, ट्रांजिशन भी करेंगे, मसले वाली बात नहीं है, ट्रांजिशन भी करेंगे। एनीवेज, so we have this now. What are we going to do? What are we going to do is that कि भाईजान, अच्छा अब मैंने करना ये है कि मैं पास करूँगा कलेक्शन, और कलेक्शन का फोल्डर मैं
रिटर्न कर दूंगा, लेकिन 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 I cannot use return response JSON or something. I can always do something. I can redirect. I don't want to do that. Or yeah, I can redirect. लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता. I want to update the state automatically. So what I will do is that के जो भी data आएगा, how are they passing the data? Let's see. web.php में गया, update, edit. एडिट में तो चलो वो वही चीज़ करती है. ये फिल का मेथड आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ, बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. नाइस. रिक्वेस्ट से यूज़र से नाइस. या जनरेट टोकन रिडायरेक्ट टू पाथ. एनीवेज, लेट्स सी. अभी के लिए सिर्फ आप ये कर लेते हैं कि रिटर्न. I would say test bench, some description, pause. So I will try to hit save. ये हो गया. Okay, let me just go to my table plus and let's see what do we get. Environmental variable में तो कुछ नहीं, लेकिन collection में ये पड़ा हुआ है. Test bench, some description, user ID 1. Okay, but for this to work, I need to do something, which is that this is a collection create folder हुआ है ना, हुआ होता तो वो एरर वगैरह आ जाना था. एनीवेज, collection ID this, collection ID this one. So now I want to show the sidebar, dashboard, sidebar. Web.php, I will say collections, collection with folders, get simple relation is nothing. Uh, no, 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 no. अच्छा, अच्छा. Okay, so we have, this was my brother. Okay, so we have पाकिस्तान में आप रहते हो ना असल में भाई, पाकिस्तान में रहता हो. यहाँ पर हर मिनट बाद कौन दरवाजा क्या कर रहा है तू अंदर, कौन दरवाजा तू अंदर कर क्या रहा है, यह नहीं पता यार. काम भी बंदा कर रहा होंगे किसी टाइम, मेला भी नहीं होता बंदा यार कसम से. तू दरवाजा खोल, तू अंदर कर की नहीं है यार. Okay, so in collection we have folders, and in folder, let's go to folder. We'll say public function collection return
सबर सबर सबर। ओके सो आई थिंक मेरा मिस्टेक समवेयर, या फाइन, नहीं मिस्टेक नहीं। ओके तो वी विल gonna get to collection with folders and collections we will say कि भाईजान collections आपके पास, सॉरी this one. Okay, so we will go back to our dashboard and we'll say collections. We'll pass the collection here and oh sorry my mistake इधर नहीं, here साइड, और साइड बार में मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके so we'll say collection and now the main part comes into play। तो जो हमारे पास कलेक्शन है असल में ये प्राइमरी बटन हो गया वो वाला, इसकी खैर है, और ये एल आई के ऊपर असल में लगेगा फॉर लूप, और यहाँ पर वो सिर्फ उसको दिखा रहा है, यहाँ पर उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। एंड लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं इस एल आई पे आता हूँ और इस एल आई के अंदर ही तो सारा कुछ है। ओके सो आई विल से समथिंग लाइक कलेक्शन मैन collections and collections dot length is greater than 0 and collections dot map, say collection, this one, undefined constant collections, uh, undefined constant collections, what do you mean by that? I just told you कि यहाँ से get कर लो, we have this collect web.php, I have this collections and I am saying कि types में type send कर दो and collections में collections send कर दो। what's the problem now? Okay fine, it's working। सॉरी टाइम आउट लगा हुआ 880 मिली सेकेंड का। ओके लेट्स गो टू साइड बार में हम गए, मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगाई थी, मैं इसको करूँगा यहाँ पर ऐसे। अब से कि भाईजान आपको जो सॉरी आई थिंक मैं व्यू को दिमाग में ले आता हूँ। से collection dot name desk bench fine and then we will loop over this li। All right. I'll say collection dot folders and collection dot folders dot length is equal to 0 and sorry greater than 0, and then I will say collection dot folders dot map, then I will pass simple folder, then I will say this one. Okay, I will say folder dot name, कह दो कि मैं चल रहा हूँ, कह दो कि मैं चल रहा हूँ। ओके
सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल कम बैक। एंड और इस चीज़ को भी डायनामिक करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ आई हैव मोर देन वन कलेक्शन तो फिर ये क्या करेगा। लेट्स सी। टेस्ट बेंच था, अब मैं एक कलेक्शन बनाता हूँ प्राइमरी कलेक्शन। और एक और चीज़, इससे पहले कि मैं ये चीज़ क्रिएट करूँ, क्रिएट कलेक्शन एंड फोल्डर में ऑन सक्सेस पे रीसेट कर रहा है। आई डोंट, ओके फाइन, रीसेट तो करे ही, बट आई ऑल्सो वांट दिस क्लोज मॉडल। आई थिंक व्यू में तो ये चीज़ हो जाती है, आई डोंट नो कि यहाँ पर होगी या नहीं होगी। आई थिंक नहीं होगी। और यार तुम तो चलते रहो भाई जान। ओके सो दिस वन रीसेट एंड आई थिंक सो ओके ये सही है। ओके सो इंटर फोल्डर नेम विल बी इवेंट्स। फाइन, टेस्ट बेंच। अब इसको दोनों खुल गए, एक खोला था, दोनों को खुल गए क्योंकि डायनामिक स्टेट नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेक, आई विल कम बैक एंड फॉर द टाइम बीइंग for the time being I will oh, hello, oh my god man, मेरी ये रुका हुआ है यार। ये वीडियो रुकी हुई है यार, what the shit man। अच्छा चलो रुका ही रहने, आई विल कम बैक।
Okay, so I am back. Okay, so let me just open my fin cam again because ये भाईजान तो रुके हुए थे, पता नहीं कहाँ आके फंस गया था. Okay, now it's good. La 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 la. Okay, so now perfect. So okay, फाइन. तो अब जैसा आप देख सकते हो मैं एक को क्लोज करूंगा लेकिन दूसरा अपने आप बंद हो जाएगा. ओहो. ओके, लेट मी गेट बैक एंड सी, एंड दैट इज बिकॉज मैं ये जो काम दिखा रहा हूँ यहाँ पर सेट ओपन मॉडल, सेट ओपन कलेक्शन, ये जो है मैं कोई की वगैरह नहीं ले रहा यहाँ पर ना. असल में मसला ये है. तो लेट्स जस्ट हैंडल दिस वन. ओपन कलेक्शन की वजह से हो रहा है. और यहाँ पर असल में करना क्या होता है, आपको कोई इंडेक्स या फिर कोई आईडी वगैरह आपको पास करनी पड़ती है कि मैंने जो है ना अ, ये वाली पास की है, तो यही वाली जो है ना ओपन करना. तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये कर दूँ, क्योंकि अभी ये ले रहा है ट्रू या फॉल्स, तो मैं इसको ओपन करूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ इतना करूँ रादर देन कि मैं फॉल्स या इस तरह का कुछ करूँ. आई से के अब स्ट्रिंग खाली. ओके, और अगर मैं इसकी स्ट्रिंग को ये करूं कि जी कलेक्शन एंड देन हाँ, आई थिंक आई कैन डू दैट. मैं इस तरह करूं कलेक्शन एंड देन दिस वन एंड कलेक्शन डॉट ID, कुछ इस तरह. एंड जहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ओपन कलेक्शन, यहाँ पर मैं ये चीज़ करूँ कि ओपन कलेक्शन इफ़ इज़ इक्वल टू है कलेक्शन डॉट ID. तो मैं ये चीज़ करूँ तो what's it gonna be, baby, what's it gonna be? Okay, so it's opening this one, but I have to do something. Now I don't have to do this now क्योंकि ये मसला करेगा मुझे. मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं हैंडल ओपनिंग ऑफ कलेक्शंस, I will do something over here, a const handle opening of collections. I will do this one, and again I will pass the ID over here. Say collection dot ID यहाँ पर पास कर दो. यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वो ID और इसको मैं ये चीज़ कर दूँगा. ओके, अब ये मुझसे आई थिंक सो कि ये कहेगा too many re-renders, knew it. So the thing which you have to do is that you have to do this. Now it's perfect. Now if I open it and if I close it, okay. So one more thing कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ अगेन तो ये क्या हो, ये बंद हो जाए.
Okay, I have to see that. I have to see that. Okay, if open collection, open collection is equal to, okay, man, oh man, if open collection is equal to this one over here, अगर तो ये सेम होता है तो आप क्या करो कि सेट कलेक्शन को खाली करवा दो, क्योंकि जैसे ही वो खाली होगा तो वो बंद हो जाएगा। आई थिंक सो, आई डोंट नो वेल, वरना ये करवा दो। हाँ ठीक हो गया, नाइस, गुड। लेकिन अब एक चीज़ का मसला है, आई हैड टू कलेक्शंस, और हाँ नहीं ठीक है, प्राइमरी कलेक्शन ओपन की, ये ओपन की, ओह इट्स वर्किंग फाइन, दैट्स सो परफेक्ट मैन। ओके सो नाउ अगेन आई हैव दिस रोला। ओके सो इट सेज दैट एक सबसे पहले तो आपकी की एक मौजूद होनी चाहिए, सो आई विल पास वन की, और वो हो जाएगी कलेक्शन डॉट आई डी, ये हमारे पास वो की हो जाएगी। और ये कहाँ पे कह रहे हैं सर, साइड बार डॉट जे एस एक्स में कह रहा है कि भाई जी आप जो है ना स्ट्रोक लाइन कैप यूज़ कर रहे हो। स्ट्रोक लाइन कैप ये रहा, इसको हम इस तरह कर देते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट। ओके सो वी हैव इवेंट्स, वी हैव फोल्डर्स एंड वी हैव कलेक्शंस, परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। बट अगेन वन मोर थिंग, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आऊँ अपने क्रिएट कलेक्शन में, द थिंग विच आई वांटेड टू डू इज़ दैट कि मेरे पास यहाँ पर टोस्ट चले, नोटिफाई, और नोटिफाई में मैं इसको कॉल कर दूँ, और रादर देन कि मैं ये चीज़ कॉल करूँ, आई विल पास द टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और नोटिफाई में मैं जो टेक्स्ट पास करूँगा वो होगा कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, notify success. Okay, let's see. I will say enter collection name. I will say secondary secondary collection, some description, and folder name will be uh, chat. I don't know. Collection created successfully and secondary collection भी आ गई मेरे पास। लेकिन असल में मसला ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये ले रहा है इस जगह के ऊपर, और वो सिर्फ इसी फॉर्म में मुझे दिखा रहा है। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे आए। तो मैंने असल में अपनी ऐप डॉट जे एस एक्स में भी इसको पुट किया था, ये रहा। तो अब आई डोंट नो मैन, मैं चाहता तो वैसे ये हूँ कि ये यहाँ पर आए, ऊपर टॉप में आए। ओके लेट मी गो बैक हियर एंड सी के, अच्छा ये यहाँ पर आ रहा है ना, टॉप सेंटर रिवर्स ऑर्डर फॉल्स, टोस्टर में टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, ये चीज़ बॉटम सेंटर नहीं। वो असल में मसला ये है कि अगर मैं इस तरह करूं कि ये जो पूरे का पूरा जो टोस्टर था, ये असल में यही तो मसला कर रहा है ना। किधर गया वो टोस्टर, आ, ये वाला। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपने ऐप डॉट जी एस एक्स में, ये था मेरे पास, और लेट मी जस्ट ओपन दिस वन एंड सी दैट कि मेरे पास यहाँ पर हर एक चीज़ है, पेजेस है, वेलकम है, डैशबोर्ड है,
और अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेटेड लेआउट में साइड बार और ये सारा कुछ आ रहा था, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ वो ये चीज़, तो अब क्या होगा? If I say again, I have to create one more collection. Oh, one sec. If I do not create this, the collection name field is required. The folder name is required. Okay, perfect. So if I say, uh, और कौन सी collection बनाए हम? Test bench 2. I don't have to pass that. Let's say कि again मैं posts ही बनाता हूँ. Collection created successfully. That's my mother. That's my boy. Sorry, that's my mother. I'm so sorry. Okay, so this is working fine, perfectly fine, perfectly fine, perfectly fine, perfectly fine, perfect. So now what do we have to do? Now I want to do something different. Now if I say post and then there should be a plus icon over here, right? When I click on it, it should create a request. नीचे मुझे वो एक अपेंड कर दे एक रिक्वेस्ट गेट की, बाय डिफ़ॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट होगी, और इनपुट दे दे और गेट की रिक्वेस्ट साथ दे दे, और मैं उसमें कुछ लिख सकूं, और जब वो अब मैं इसका रिकॉर्ड कैसे रखूँगा कि जब वो उसके ऊपर क्लिक करे? लेट्स सी. Hello. All right, so it doesn't matter now, boy. We don't really care about that. So if I say post sidebar, if I say folder dot name आया, and if I say span, और मेरे पास सबसे ऊपर एक प्लस का आइकन पड़ा हुआ था, ये रहा, यही है, हाँ यही है. Okay. Inline flex, justify, good. Okay, I say plus, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए. आ, 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 इसके नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए. यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? ये रहा वो प्लस. अब प्लस के ऊपर जब मैं करूँ क्लिक, तो इसके नीचे एक बटन बन जाए तो बात बन जाए. या
या फिर मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूं, क्योंकि मुझे दिखानी तो रिक्वेस्ट है ही है, मैं अगर एक और मॉडल ओपन करूं और उसमें सिर्फ ये हो रिक्वेस्ट गेट, ये चीज़ हो उसमें, ये मतलब आप बताओ, आप गेट की रिक्वेस्ट बनाना चाह रहे हो कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। अगर तो वो गेट की रिक्वेस्ट बनाता है या कोई से भी वो सिलेक्ट करता है कि हाँ मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो सिलेक्ट करेगा रिक्वेस्ट टाइप, और उसके बाद अपनी वो और रिक्वेस्ट का नेम, ये चीज़ करेगा, हिट मार देगा, कह देगा मैं क्रिएट कर दी मैंने। जैसे उसने क्रिएट की तो हम उसको जैसे सी बात है, डाटा तो उधर से आ ही रहा होगा, वो डाटा यहाँ पर अपेंड हो जाएगा और वो पोस्ट के नीचे चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, और वो ये चीज़ होगी द सेम थिंग अगेन, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी, आई वांट डू द सेम थिंग ओवर हियर। सो दिस इज़ माय फोल्डर नेम एंड दिस इज़ माय दैट स्पैन एंड दिस इज़ दैट वो एस वी जी ओपन मोडाल, नहीं ओपन मोडाल नहीं, दिस इज़ दैट बटन जो कि एल आई है, और उसमें जो है वो बटन है वो। अच्छा एक और चीज़ वो ये कि फोल्डर्स कलेक्शन डॉट फोल्डर्स का जो मैप लगाया ना मैंने, ये भी एक एल आई है, तो इसको मैं की एक दे दूँगा जो कि होगी फोल्डर डॉट आई डी, इधर भी की एक डाल देते हैं। और इस स्पैन के ऊपर क्लिक करके वो एक और चीज़ जो है वो ओपन कर देंगे, तो उसकी क्लासेस वगैरह हम जो है वो आ, यहीं से उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल py2 space 2, और ये मैंने pl5 दिया हुआ था इसको। हाँ ठीक है, pl5 फोल्डर के ऊपर pl5, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सिर्फ इसको रादर देन कि मैं स्पैन कहूँ, लेट्स जस्ट से दिस इज़ अ बटन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बटन, okay, and by clicking on this button I want to do the same thing that I did over here. I will copy and paste, set open folder, copy this one, copy this one, फोल्डर ओपन फोल्डर, ओके, फोल्डर डॉट ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन इसको मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट डू दिस वन, फोल्डर एंड देन फोल्डर, ओके जी। अब मैं नीचे आऊँगा और इस पॉइंट के ऊपर आकर बटन, और बटन क्या, ये सेम चीज़ सिलेक्शन डॉट आई डी भेज रहा था मैं, यहाँ से मैं ये चीज़ उठा लूँगा और मैं, हाँ हाँ, अच्छा एक सेकेंड, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी रो के ऊपर भी क्लिक करूँ, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पे इस तरह क्लिक करता हूँ ना तो ये चीज़ हो जाती है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो चीज़ हो जाए। तो ठीक है, मतलब मैं असल में ये चीज़ इस पूरे जो ए लिखा हुआ है, ये जो ए है, दिस इज़ नॉट अ ए, दिस इज़ लेट्स जस्ट से इट्स अ button. I will do the same thing over here like this. Okay, so rather than it's going to it will be a folder dot id, और क्योंकि folder dot अच्छा ये क्या कह रहा है, could not find folder, okay sorry, it will be a folder dot id, और folder dot id में आगे अब जिस तरह ये था ना, ये था, ये एल आई था, ये एल आई था, ये सारे का सारा यहाँ तक फैला हुआ है, तो मैं एक और एल आई बनाऊँगा जो कि होगा इस जगह के ऊपर, नहीं उससे नीचे, लाइक जो मैं दिखा, हाँ ये वाला यू एल बनाऊँगा, सॉरी असल में मैं एक तो यू एल बनेगा, और वो यू एल ये सारा मैं कॉपी कर लूँगा, और इस एल आई के अंदर, क्योंकि उसने भी ऐसे किया हुआ है, उसने क्या मैंने किया था वैसे तो एल आई, लेकिन वो बड़े वाला एल आई ना यार उस्ताद,
बड़े वाला एल आई, लेकिन उस एल आई के अंदर ही तो यूएल है ना, तो आई विल जस्ट डू द सेम थिंग ओवर हियर। व्हाट इज दिस? यस माय पेरेंट एलिमेंट, ओके वन सेक, जस्ट डू दिस। तो इस एल आई के अंदर, सॉरी, इस एल आई के अंदर, दिस वन राइट ओवर हियर, ओके। सो आई विल जस्ट फॉर्मेट इट, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। और अच्छा जी, अब फोल्डर के अंदर रिक्वेस्ट आएंगी, तो अब वो मुझे कहेगा कि मुझे फ़ोल्डर के अंदर रिक्वेस्ट मिली नहीं, तो मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा, और बल्कि मैं वेब डॉट पी एच पी में जाऊंगा, और मैं बल्कि नहीं, मैं फ़ोल्डर में जाऊंगा। फ़ोल्डर में मैंने कलेक्शन का बनाया हुआ था। आई विल क्रिएट वन मोर विच विल से पब्लिक फंक्शन रिक्वेस्ट, and this will have has many, and I will say return this has many request class। फाइन, रिक्वेस्ट में हम एक और चीज़ कर देंगे कि पहले तो चलो पब्लिक फंक्शन फोल्डर belongs to return this belongs to, एंड belongs to आ जाएगा मेरे पास रिक्वेस्ट का, सॉरी फोल्डर, रिक्वेस्ट है ना, तो यहाँ पर फोल्डर आएगा। फाइन, और असल में यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। फोल्डर में मैं जाऊँगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट का हैज़ मैनी रिक्वेस्ट का बना हुआ है। ठीक है, मैं वेब डॉट पी एच पी में आऊँगा, एंड आई विल से विद फोल्डर्स डॉट रिक्वेस्ट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर उसके अंदर, हाँ ठीक है, मैंने ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, फाइन फाइन फाइन, मैंने वो किया हुआ है इस वजह से। तो मैं आऊँगा अब यहाँ पर, तो कलेक्शन डॉट फोल्डर्स के ऊपर लगा हुआ है, तो असल में मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा कलेक्शन कलेक्शन फोल्डर डॉट नेम की बजाय हम रिक्वेस्ट डॉट नेम करेंगे। आई विल से दिस वन विल बी फोल्डर्स रिक्वेस्ट्स, और यहाँ पर आ जाएगी रिक्वेस्ट डॉट आई डी, और ये क्या कर रहा था असल में, हैंडल ओपनिंग ऑफ फोल्डर्स, जो कि मैं हैंडल ओपनिंग ऑफ ये क्या, एक सेकंड, फोल्डर, अच्छा यहाँ पर मैंने इसमें फोल्डर करना है, सॉरी, फोल्डर डॉट आई डी उसमें चली जाएगी, और मुझे ये वाली चीज़ जो है वो नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने इससे आगे कुछ नहीं ओपन करना। इससे आगे सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक ही कर सकेगा वो, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करने देना। उसके जी यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट नेम, और आई थिंक दैट्स इट। पोस्ट, हेलो हेलो हेलो, ओ भाई ऐसे ना करी, ऐसे ना करी, तेरी मेहरबानी, ऐसे ना करी। ओके फाइन, इट्स वर्किंग। ओके, लेट्स गो बैक, और यहाँ पर मैं फोल्डर डॉट नेम ही रहने दूंगा। मैं क्या कर रहा था यार, ये देखो ना, मसला है ना यार, ये रिक्वेस्ट डॉट नेम आ जाएगा इस जगह के ऊपर, और हाँ मैं था इस जगह के ऊपर। सो आई विल जस्ट कॉपी, एंड आई विल से दिस वन लाइक दिस। आई विल से नाउ कि अगर तो
अगर तो फोल्डर डॉट रिक्वेस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू फोल्डर डॉट रिक्वेस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, देन डू दिस क्लास, वरना आप खाली छोड़ दो, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट दैट not much is happening here, activity from stream will be shown here. No, it's fine. Okay, let's see here. So I will say come over here. अगर तो रिक्वेस्ट होगी तो फिर हमें ये चीज़ दिखा देगा, वरना वो चीज़ नहीं दिखा। लेकिन पोस्ट के जो हमारे पास पोस्ट का रोला था उसमें ये चीज़ थी कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था। लाइक पोस्ट आप क्रिएट जब करोगे तो इट शुड हैव कलेक्शन नेम एंड अ फोल्डर नेम। इसके अलावा आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कैंसिल कर देते हैं इसको। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ गया ये। अब मैं आऊँगा अपने इस जगह के ऊपर। ऑलराइट, सो अब हमने करना है भाईजान क्रिएट। अब मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो असल में मैं करना क्या चाहता हूँ। ओ ला 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 रे रे री रा 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 ए ए I would have to do one more thing right now. I would have to, okay, so let's just do this. बाकी बाद में देखेंगे। ओके जी, ये ओपन मॉडल आ गया। I will do one more thing for, sorry, not this one, this one. Copy this, open request modal, इसको कर दिया हमने ऐसे। और क्लोज मॉडल पे हम सिंपली क्लोज रिक्वेस्ट मॉडल, और यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉडल बंद कर देंगे। एंड आई थिंक इट्स गुड नाउ। क्लोज रिक्वेस्ट मॉडल, सेट ओपन रिक्वेस्ट मॉडल इस तरह हो जाएगा, और क्लोज मॉडल इस तरह हो जाएगा। लेट्स कम डाउन एंड कॉपी दिस वन, सेट रिक्वेस्ट मॉडल ओपन क्लोज रिक्वेस्ट मॉडल, सेट ओपन रिक्वेस्ट मॉडल। ठीक है जी, लेट्स सी। अच्छा, मैंने उसको कहा तो है नहीं कि इसको ओपन कर। इसमें ना मैं एक चीज़ करूँगा, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करवाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो, वरना वो जो है ना इसके ऊपर क्लिक करने पे असल में मैंने एक्सपेंड करवाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करवाने पे असल में वो चीज़ करवाऊँगा। ऑन ऑन क्लिक सेट ओपन रिक्वेस्ट मॉडल ट्रू। ये मेरे ख्याल से ना प्रोपिकेट कर रहा है। इवेंट डॉट प्रिवेंट, हम मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का काम कर रहा है ये। ओपन रिक्वेस्ट मॉडल हैंडल रिक्वेस्ट मॉडल। हम यहाँ पर आएंगे, नीचे वाले क्लोज कर देते हैं, ऊपर वाले ओपन करवा देते हैं। इवेंट क्या भाई, ई डॉट, चलो ई ए लिखी जा रहा है यार ये बंदा।
इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, वो होता है प्रोपगेट। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ये चीज़ आप देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अलर्ट लगाता हूँ ना, तो इट्स नॉट वर्किंग, राइट, क्योंकि वो वाला ओपन ले रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अलर्ट लगाता हूँ ना, तो आप देखिएगा मैं उसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, आई थिंक सो कि यही हो रहा है। हाँ ये देखा, अब मैं चाहे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पे वो आएगा, क्योंकि वो पेरेंट है और पेरेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका होता है हल प्रोपगेट डिफेंट नो प्रोपोगेट इवेंट, हाँ ये रहा, स्टॉप प्रोपगेशन, ई डॉट होता है या फिर इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, ये रहा, स्टॉप प्रोपगेशन होता है। इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म, बल्कि इसको चेक कर लेंगे ना हम। नो, यार होता तो वैसे यही है यार, ये ऐसे तो ना करें ना यार मेरे साथ, देखो अब इतनी दूर से पानी खींच के लेके आया हूँ मैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ये फोल्डर इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर बटन है। हाँ ये रहा ना, क्योंकि वो ये, हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है। तो ये मैंने गलत नहीं लगा दिया, रिक्वेस्ट डॉट नेम एंड दैट्स इट, ये मैंने गलत जगह नहीं लगा दिया। ये न माँ, तारा निशना, इसमें टाइप भी बता देंगे रिक्वेस्ट की टाइप क्या है। लेकिन उससे पहले बटन किधर है? हाँ, हाँ ये रहा ना, perfect। हाँ तो मसला प्रोपगेशन का ही था, लेकिन मैंने बटन गलत जगह लगाया हुआ था। तो अगर फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं, स्टॉप प्रोपगेशन किधर है? ये रो, किधर है? ओह ओके, ऐसे ओ, ओके सो इट, ओके ओके फाइन फाइन, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, इसके ऊपर हाँ ठीक है, फाइन फाइन, नहीं ना फाइन फाइन, अच्छा वो ओपन भी हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल बी करते हैं, फाइन फाइन, वो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, वो प्रोपगेशन के बगैर भी चल रहा है, इट्स फाइन। लेकिन इस तरह के मसले आपको आ जाते होते हैं, क्योंकि वी हैव अ पेरेंट, पेरेंट डिव, और पेरेंट डिव के ऊपर एक बटन है जो कि सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और उसको उसने असल में एक्सपेंड करना है, वो भी ऑन क्लिक चल रहा है, और उसके अंदर एक और बटन है वो भी ऑन क्लिक चल रहा है। इफ़ यू नो कि ये मसला होता है देन इट्स फाइन, पर इफ़ यू डोंट नो देन it works, so it's fine. So sidebar we have components, we have create collection, and now we will create one more component which will be create request dot js. So we'll just copy the paste thing over here, and in our sidebar we'll say create request. I know.
create request is not defined. Okay, अब define है. Fine. Let's go to create request. और create request में अब हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए select box जिसमें उसकी टाइप्स आ रही होंगी, और एक हमें चाहिए कि वो एक तो ये कि किस टाइप का है, और दूसरा ये कि वो क्या नाम है उस रिक्वेस्ट का. सो विल गो अबव एंड विल से अच्छा वन सेक, सेट ओपन रिक्वेस्ट modal, set open modal, set open request. ओके, तो जी I am back. Let's change the create request. अच्छा, यहाँ पर अब सिलेक्ट बॉक्स देना है हमने, तो सिलेक्ट बॉक्स भी अच्छा सा करना पड़ेगा यार, वो अजीब सा ऐसा अच्छा नहीं लगता. और बाकी एनीवेज हम वो ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी हो सकता है. कुछ पाथ वगैरह सेंड करना पड़ेगा. दैट्स फाइन फॉर नाउ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, पहले तो अलर्ट ख़त्म करें ना इसका, बस ठीक है, चल गया. हाँ देखा, बटन अपीयर है डिसाइडेड ऑफ अ बटन, मेन क्लास नहीं है, और बाद में देखूंगा तुम्हें मैं. ओके, so create request, you have request type and request name to fill out the below form. Create request, so I'll say input error, ठीक है, इसको पढ़ा रहने दो. टेक्स्ट इनपुट की जगह हम कर देंगे सिलेक्ट, या फिर ऑप्शन में अच्छा एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि ये जो क्रिएट रिक्वेस्ट है ये असल में आ रहा है यहाँ पर, तो हमें टाइप्स मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ वैसे तो, साइड बार में आ रही हैं, लेकिन डैशबोर्ड में मैं अगर जाऊँ तो मैं टाइप्स यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ. आई नीड टू सेंड दीज टाइप्स हियर टू साइड बार में. तो अब मैं साइड इसको सिर्फ मैं कॉपी कर लूँगा, साइड बार में आऊँगा और यहाँ पर मैं वो साइड बार पकड़ लूँगा. साइड बार पकड़ के यहाँ से मैं नीचे आऊँगा और क्रिएट रिक्वेस्ट में वो टाइप्स ऐसे इसमें सेंड कर दूँगा. और क्रिएट रिक्वेस्ट में आऊँगा तो मैं यहाँ से वो टाइप गेट कर लूँगा. अब ये टाइप्स का मैं लगाऊंगा यहाँ पर मैप, और यहाँ से मेरे पास बहुत सारी वो जो है वो टाइप्स आ जाएंगी. ओके, लेट्स सी, I'll say types and types dot length is greater than 0, then
ऑप्शन, ये ऑप्शन असल में हो जाएगी हमारे पास टाइप डॉट आई डी, यहाँ पर आ जाएगा टाइप डॉट नेम टू अपर केस। न्यू इट, रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक सो, नहीं आ रहा, टाइप्स नहीं आ रही। मैं टाइप्स डैशबोर्ड में ले रहा हूँ, वन सेकंड लेट मी सी। टाइप्स मैंने ली, यहाँ से मैं गया साइड बार में, साइड बार में मैंने टाइप्स यहाँ से गेट कर ली, नीचे आया मैंने क्रिएट रिक्वेस्ट में सेट ओपन मोडाल और टाइप्स को मैंने टाइप सेलेक्ट किया एज अ प्रोप सेंड कर दिया। क्रिएट रिक्वेस्ट में आया, टाइप्स मैंने गेट की, types and types dot length is equal to this one, type dot id type dot name dot lower case। अब इसमें क्या रोल है, न न न न न न न न ए ए डरा डरा रा रा रा। ओके लेट्स सी टाइप्स किधर हूँ मैं, इसको क्रिएट लॉग टाइप्स आ तो गई है यार, ऑब्जेक्ट टाइप डॉट नेम है, ओह ओके। मुझे यहाँ पर असल में रिटर्न करना था, इवन दो के दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड चॉइस, मतलब अच्छा तो नहीं होता ये, लेकिन खैर मैं इसको ना भी करूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ पुट कर दूँ। तो अभी मेरे पास आ जाएंगी, और की डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है, टाइप डॉट आई डी का। Okay, now if I say come on give me this one, type post put patch, जो मर्जी आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हैं। and one more thing which I want to do is that के collection name नहीं, it should be request type class with full okay bg gray 900 text gray 200 rounded md fine and my1 now empty 2। okay, so I think we are good, we didn't have, we would have done the same thing कि वो ड्रॉप डाउन वगैरह जो ये लगा हुआ है इसके साथ, ओए बड़ी तू शय हैगी है, ये चेक करी यार, इसके काम चेक करी यार, इधर मुझे कैंसिल करवाना पड़ रहा है, इधर आके मैं जब इसको इस तरह कर रहा हूँ तो देखो बंद हो रहा है, मर्जी है यार। कैंसिल तो उन्हें कुछ नहीं है लेकिन ये गलत बात है ना यार, देखो मतलब मैं भी तो इंसान ही हूँ, मतलब इसका ऐसे बंद हो रहा है और उसका हो नहीं रहा, क्या है यार, मर्जी है तुम्हारी। एनीवेज तो मैं ये भी ड्रॉप डाउन दे सकता था वहाँ पर, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होना था इतना ख़ास, वो ठीक है, ये वाले ठीक है, सिंपल सेलेक्ट बॉक्स लगा हुआ है और इसके नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी, वी डोंट नीड डिस्क्रिप्शन, वी जस्ट नीड फोल्डर नेम था जहाँ पर, वहाँ पर हम कर देंगे
क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट नेम, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट टाइप आ जाएगी। ओके, इसने फोकस किया, उसने भी फोकस कर दिया। ओके फाइन। सो नाउ वैल्यू विल बी डाटा डॉट, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर दें। कलेक्शन नेम था तो इसको हम कर देंगे फोल्डर टाइप, सॉरी माय मिस्टेक, रिक्वेस्ट टाइप और रिक्वेस्ट नेम। ओके हो गया जी। और ये वैसे तो आईडी हम भेजेंगे यहाँ पर, जिस तरह ये ले रहा है वैल्यू डाटा डॉट, ये वैल्यू डाटा डॉट रिक्वेस्ट टाइप। और अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें तो मेरे ख्याल से ये होएगा ना, ऑन चेंज ये चीज़ हो जाए। रिक्वेस्ट टाइप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो असल में ये लेगा क्या, आई थिंक से ये मुझे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर ना ये रखनी पड़ेगी, डाटा डॉट आईडी रखनी पड़ेगी, डाटा डॉट टाइप डॉट आईडी करनी पड़ेगी, नहीं ये चीज़ करनी पड़ेगी, टाइप डॉट आईडियो, आईडियो कह दिया आईडी, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल सेट डाटा रिक्वेस्ट टाइप कर रहा हूँ तो जो भी वैल्यू होगी वो असल में आईडी होगी, तो मैंने भेजनी तो आईडी है ना, तो ये चीज़ होगी यहाँ पर। सेव्ड सेव सो वी हैव दिस वन, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल क्लोज मोडाल सेट ओपन रिक्वेस्ट मोडाल, ये यहाँ से मेरे पास ये आया, और साइड बार में सेट ओपन रिक्वेस्ट मोडाल, ये चीज़ यहाँ लगी हुई है, सेट ओपन रिक्वेस्ट मोडाल क्लोज रिक्वेस्ट मोडाल। नहीं गया, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। सेट ओपन रिक्वेस्ट मोडाल इज़ नॉट अ फंक्शन, सेट ओपन मोडाल ये भेजा, क्लोज रिक्वेस्ट मोडाल सेट ओपन मोडाल भेजा, ओ बल्कि मुझे यहाँ पर ये नहीं भेजना, मुझे ये भेजना, सेट ओपन रिक्वेस्ट मोडाल, और ये चीज़ भी यहाँ पर सेम ऐसे हो जाएगी। ओके रिफ्रेश, कैंसिल, गायब, परफेक्ट। तो oh my god man, I did a lot of work man, I did a lot of work. Okay, so anyways, we'll say okay, get request enter folder name. Now we'll say okay, this is not folder name, create request, why is it saying folder, okay. Request name or enter request name, request type, so perfect, post put dash delete, let's go to by the way यही होगा, store request कलेक्शन कंट्रोलर था, यहाँ पर हम बना देंगे
रिक्वेस्ट फ्लो, परफेक्ट। और हम जाएंगे वेब डॉट php में, तो कॉपी कर लेंगे सिंपली, रिक्वेस्ट जस्ट क्रिएट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कंट्रोलर, और क्रिएट कलेक्शन फोल्डर, क्रिएट रिक्वेस्ट में जाएंगे, पब्लिक फंक्शन क्रिएट रिक्वेस्ट, और उसके बाद क्रिएट रिक्वेस्ट में हमारे पास हो जाएगा भाईजान, वी विल यूज स्टोर रिक्वेस्ट एंड दिस विल बी रिक्वेस्ट, और इसमें जाएंगे, इसको हम कर देंगे ट्रू। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट टाइप which should be required and exists table request types id and हाँ ये तो मिलेगा ना, रिक्वेस्ट नेम, और ये सिंपली सिर्फ रिक्वायर्ड होगा। हाँ ये भी इसमें हो सकता है कि exists टेबल रिक्वेस्ट टाइप्स कॉलम नेम, सारी सी बात है। रिक्वेस्ट टाइप अगर मैं आईडी में चेक कर रहा हूँ और नेम, ओहो ओहो मैन, ओ मैन क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया यार, क्या हो गया उस्ताद ओए इजी हो यार, इजी हो भाई, कुछ नहीं हुआ। ओके ऑलराइट 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 ओके, सो इन माय रिक्वेस्ट कंट्रोलर, बस होगी मेरी, वैसे कसम में मेरी बस होगी, विल से कि रिटर्न कर दो रिक्वेस्ट क्रिएट नेम रिक्वेस्ट से जो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर नेम आ रहा है, और यूज़र आईडी भी तो है ना इसमें, यूज़र आईडी, बल्कि नहीं 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 नहीं, इसमें ये सिर्फ तो नहीं ना आएगा। अभी देखो मैं बताता लोचा क्या है, मैंने तलने को लोचा बताता ही क्या है। हाँ ना, तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ ना, इट्स फाइन। असल में मैं ये कह रहा हूँ, आप इस कलेक्शन में हो, इस कलेक्शन की पोस्ट है, पोस्ट का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आप एक रिक्वेस्ट बना रहे हो, तो जो डाटा जाएगा वो ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, लो जी यूज़र आईडी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट टाइप, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेट्स सी क्रिएट, अच्छा मैं यहीं से एरर भी वापस भेज दूंगा, क्रिएट रिक्वेस्ट, तो इसमें है आईडी है, नेम है, टाइप है, टाइप गेट पोस्ट पुट पैच, या इनमें से कोई एक आध जो है वो होगा। ओ यार गलत कर दिया ना मैंने, गलत कर दिया ना, रिक्वेस्ट टाइप का तो एक अलग से वो बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, तो इसमें आईडी आएगी, तो फोल्डर का नाम आ जाएगा। ओए यार I would have to do that same thing again and again, man oh man।
इसमें टाइप आएगी, फोल्डर आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। मैन माइग्रेट, फेल टू रिक्वेस्ट टाइप कनेक्शन, क्या कह रहा है? फेल टू ओपन द रेफरेंस टेबल रिक्वेस्ट टाइप कनेक्शन अल्टर टेबल रिक्वेस्ट एंड कंसंट्रेट फॉरेन आईडी रिक्वेस्ट टाइप्स। वन सेक। अब और रिक्वेस्ट अब होगा ना इशू, जाहिर सी बात है। वो कह रहा है कि भाईजान मुझे रिक्वेस्ट टाइप मैं कहाँ से लूँ, तुम्हारे पास तो जो है वो रिक्वेस्ट टाइप तो सबसे एंड पे पड़ी हुई है। तो आई कैन डू दिस वन थिंग के बस चुप करके फिर इसको 17 था, इसको 18 कर दो, टाइम चेंज कर दो, बस यही हो सकता है और क्या हो सकता है दोबारा। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अब क्या होगा भला। अब ये होगा कि जो मैं रिक्वेस्ट सेव करवाने लगूंगा, मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो फोल्डर की आईडी वगैरह तो मुझे भेजनी पड़ेगी भैया जी, क्योंकि ऐसे तो ना होवे। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये किस जो है वो फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, यूज़र आईडी के मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, फोल्डर का ही पता लगाना करेगा, क्योंकि फोल्डर से मुझे कलेक्शन का पता चलेगा और फोल्डर की आईडी भेजनी पड़ेगी। किधर है ये है। सो आई विल डू वन थिंग के जब ये ओपन कर रहा है, बल्कि यहाँ पर हैंडल रिक्वेस्ट मोडाल जब ये ओपन कर रहा है, तो मैं इस तरह करूँ कि इसके अंदर फ़ोल्डर की आईडी भेज दूँ। जब मैं इसके अंदर फ़ोल्डर की आईडी भेजूँगा तो ये मैं एक स्टेट बना लूँगा, वो वहाँ से ओके ऑन क्लिक हैंडल रिक्वेस्ट मोडाल, ये सब मैं उसको क्लिक कर रहा है। ओके, आई विल से फोल्डर डॉट आईडी आपके अंदर जाएगी सर। यहाँ पर मैं एक स्टेट बना लूँगा, फोल्डर आईडी सेट फोल्डर आईडी initial value null, set folder id, folder id, set folder id, set folder id, folder id, set folder id, folder id, set folder id, set folder id over here, id, set folder id, id, and the folder id I will pass it down here. So I will say folder id, folder id. In create request I will get this id, folder id. I will say folder id is equal to folder id. What do you say? Is this fine? तो जब मैं हर एक चीज़ भेजूँगा साथ में, और क्रिएट रिक्वेस्ट में मेरे पास ये हो रहा है, आई विल जस्ट से कि अच्छा रिक्वेस्ट कंट्रोलर में ना अभी के लिए हम क्या करते हैं, डीडी करवा देते हैं रिक्वेस्ट से जो भी आ रहा है। ओके, कम ओवर हियर, क्रिएट रिक्वेस्ट, नोटिफाई सक्सेस कलेक्शन नहीं, नोटिफाई सक्सेस मेरे पास ये आ गई। आई विल से रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लोज मोडाल हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, रिक्वेस्ट टाइप ये हो जाएगी, रिक्वेस्ट फोल्डर आईडी हो जाएगी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट हो जाएगा। Cherry ZA webs, I need to register, I think Cherry webs to, yep, sorry, my name should be Shan Arshad Cherry ZA Cherry webs,
password, the same password, and I will say password. Register myself. I got here. I will say collection name, test bench, auth. I'll create it. Collection created successfully. Ah, now I get it. Too many re-renders. Okay, okay, got it. Where was it? Okay, so sidebar में मैं ये चीज़ कर रहा था ना जहाँ पर ये चीज़ ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस्ताद मैं करूँ कुछ और एरर ना आए ऑथ ऑथ में हाँ रिक्वेस्ट टाइप्स भी नहीं होंगी ऑफ कोर्स आई नीड टू रन द php artisan db seed okay now if I refresh I will open it I will get I'll say post enter request name it's a register post dd validate required exist does not exist validator required okay one sec. In my request controller फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने भेजनी वो वाली है इससे पोस्ट रजिस्टर ओके सो रिक्वेस्ट टाइप 2 आ गई मेरे पास रिक्वेस्ट नेम रजिस्टर आ गया फोल्डर आईडी दिया आ गई ठीक है जी ओके नो प्रॉब्लम लेकिन हाँ ठीक है फोल्डर है ना फोल्डर का कलेक्शन मैं ढूंढ लूँगा और उसके अंदर मैं सेव करवा दूंगा बल्कि नहीं फोल्डर की आईडी मुझे चाहिए मैं उसके अंदर सेव करवा दूंगा वहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ फाइन रिक्वेस्ट कंट्रोलर आई डोंट नीड दिस वन यू क्लोज ओके यू क्लोज क्या यू कट ओके सो आई से रिटर्न नेम रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट का नेम यूज़र आईडी विल बी दी auth id and I can just import it from facades and I'll say request अच्छा नेम हो गया यूज़र आईडी हो गई इसके बाद क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए फोल्डर आईडी रिक्वेस्ट से फोल्डर आईडी वन सेक क्या था वो फोल्डर अंडरस्कोर आईडी था या फोल्डर आईडी था आई डोंट नो लेट्स सी dd request से और इधर अच्छा फोल्डर आईडी ओके असल में मैंने ये इसलिए चेक किया मैं ये भी चेक कर सकता था कि मैं भेज क्या रहा हूँ लेकिन ये चेक करने का मकसद ये होता है कि जब फ्रंट एंड लेवल से डेटाबेस लेवल तक डाटा जाता है ना तो जो कीज़ होती हैं वो ये जो मैंने आई बड़ा लिखा हुआ है इट चेंज ये चेंज हो जाता होता है इसी तरह जाते हुए का मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने चेक कर लिया लेकिन आते हुए का तो पक्का पता है कि अगर आप वहाँ से वेरिएबल कुछ इस तरह भेज रहे हो लाइक फोल्डर्स एंड देन बिग लाइक कैमल केस आप वेरिएबल भेज रहे हो तो जब फ्रंट एंड पे आएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली भी अंडरस्कोर में लाइक वो उसको कन्वर्ट कर देगा सो इट्स काइंड ऑफ अ दैट थिंग कि मैंने इसलिए जब ये चीज़ की थी सो वी हैव नेम वी हैव यूज़र आईडी वी हैव फोल्डर आईडी नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट वन नंबर क्रिएट क्या अरे गिवन ओ भाई तुम कौन सी रिक्वेस्ट ले रहे हो और यार अल्लाह के बंदे ये नहीं लेना मॉडल रिक्वेस्ट है ये अच्छा नेम हो गया फोल्डर आईडी हो गई माइग्रेशन की तरह मेरी नेम हो गया फोल्डर आईडी यूज़र आईडी रिक्वेस्ट टाइप ठीक है रिक्वेस्ट टाइप भी सेंड करनी है ओके रिक्वेस्ट टाइप आईडी आएगी क्या आएगा लेट मी सी इन रिक्वेस्ट्स नो क्लोज दिस वन इन रिक्वेस्ट्स वी हैव फोल्डर आईडी रिक्वेस्ट टाइप आईडी नहीं हो इट लेकिन फिर भी कंफर्म करना
request type ID, and then it will be request से request टाइप जो भी आ रही है, तो ये हम जो है वो क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद क्रिएट रिक्वेस्ट में एवरीथिंग शुड बी वर्किंग फाइन नाउ। मेरी वीडियो चल रही है। ओके, सो एवरीथिंग शुड बी वर्किंग फाइन नाउ। लेट्स सी, आई विल से come on, create, post, I will say register, I will save it. Okay, बेस्ट ऐप मॉडल, अच्छा मैं करने ही लगा था लेकिन फिर मुझे बाद में भूल गया। ओके, आई से fill able, I'll say request, sorry, it will be just a name, will be request type ID, it will be request type ID, name, request type ID और यूज़र ID, फोल्डर ID। ओके, अच्छा अब वो नहीं चल रहा, अब वो नहीं चल रहा, एक सेकंड रिफ्रेश करूँ। हाँ अब वो नहीं चल रहा, ओए ये क्या हो गया? ठीक है, मतलब मैं समझ गया हूँ कि ओथ आया, ओथ के अंदर रजिस्टर आ गया, लॉगिन आ गया, ये असल में उसकी रिक्वेस्ट हैं। लेकिन ये मुझे क्लोज या ओपन क्यों नहीं करने दे रहा? यही तो चीज़ हैंडल करनी थी। रिक्वेस्ट डॉट नेम आ गया, नाउ वी विल नॉट हैव दिस। लेट मी गोज टू हीरो आइकॉन। क्या हो गया यार? हीरो आइकॉन, दुआ मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे पना मांगता हूँ यार। ओके, ये ना असल में अब ये वो चीज़ हो गई। और PL5 ये जो लगा हुआ है ना, PL7 करना पड़ना है। नहीं नहीं, ये ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे ये PL5 ये लगा था, इसको 8 कर दो ऐसे। दैट्स माय बॉयज। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक आया है ना असल में? ओके फाइन। PL8 मतलब ये थोड़ा सा इधर हो गया। और अब हम एक चीज़ करेंगे, वो ये है कि हैंडल ओपनिंग ऑफ फोल्डर्स। हालांकि मैंने कहा भी है, और वो ये है कि यहाँ पर ओपन कलेक्शन ही ना आएगा फिर। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। ओपन फोल्डर सेट, ओपन फोल्डर कलेक्शन, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर ओवर हियर, ओपन फोल्डर नीचे आ जाएगा और इसमें हो जाएगा ओपन फोल्डर। तेरी मैं ऐसी तैसी, रुक जा जरा बेटे। ओए
एक सेकंड, मैंने ये लगाया होगा, अच्छा मैंने ये लगाया नहीं है, ओके। तो मैं इस यूएल को पकड़ूंगा, असल में ये इसी पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, असल में मैंने वो लगाया नहीं था, ओके फाइन, नो वरीज नो वरीज। आई विल से इफ दिस वन एंड देन शो दिस वन, ओके। हाँ वो तो लगा ही हुआ ना, लेकिन अगर हम चेक करें ना तो देखो मैंने क्लास, हाँ ठीक है, ओके फाइन। ओपन कलेक्शन नहीं, ओपन फोल्डर है ये, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर असल में फोल्डर हो जाएगा, और यहाँ पर असल में फोल्डर डॉट आईडी हो जाएगी, और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, और इसको हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर ले आएंगे। हाय 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 जिशान भाई, क्या बात है यार आपकी, क्या ही खूबसूरत बात है यार आपकी। दिल क्या करें जिंदगी हो सकी, ओ जाने जा मजा आ गया। लेकिन अब एक और मसला है ना, ये देखना ये देखना, अभी क्या होगा, अभी ये चीज़ चेक करना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मैंने जो प्रोपोगेट वाली बात की थी, और देखा। इलाही मैं तुझसे, स्टॉप प्रोपोगेशन, हाँ ये नहीं, ये असल में मैंने कहाँ से उठाया था, ये था स्टॉप प्रोपोगेशन। इवेंट उसको मिलेगा नहीं तो हम ई डॉट कर देंगे, आई थिंक सो कि अब इसको, अच्छा वो ओ ओके, तो उसने उसको ही ख़त्म कर दिया, उसने कहा भाई तू गैप पे हो, फटे पे हो, अच्छा एक सेकंड, हम ये यहाँ नहीं तो यहाँ लगा लेते हैं। यार क्या यार, खुदा की कसम, लो भले भाई तेरे, भले, ऐसे ही ठीक है, फिर ऐसे बाज आ जाएगा, ये चीज़ होगी। अच्छा वो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, मैं अल्लाह की कसम ये कुछ हो यार, कीबोर्ड बहुत फास्ट है असल में ना, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इट शुड लाइक डू दिस वन। ठीक है जी, ओके जी, अब क्या करें जी, अब क्या हो सकता है जी, आई थिंक यार कि अब मुझे खाना शाना खा लेना चाहिए, आई थिंक दैट दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी ये है कि मज़ा आ गया इसको करने का, लेकिन एनीवेज, और कोड भी ऐसा उस्ताद जो भाई ने खुद लिखा, वैसे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं थी इसमें, जो मैंने, इतना मुश्किल था नहीं है, लेकिन फिर भी असल मज़ा है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो सारा मॉडल है ये चेंज हो जाए, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे चेंज हो जाए, और हो कैसे कि अब जाहिर सी बात है राउट तो चेंज होने से रहा,
या फिर मैं राउट भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं राउट चेंज करूँ तो जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मेथड सिलेक्टेड मेथड आ जाएगा, जो भी डाटा भेजा होगा वो यहाँ पे आएगा, ओथ आ जाएगा, हेडर्स आ जाएंगे, और जो रिस्पॉन्स है वो भी नीचे आ जाएगा कि भाई जी आपकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर लास्ट टाइम ये था। हम्म, चलो कोई नहीं। हाँ, आपकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर ये था सारा सामान। साइड बार वैसे का वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ, हाँ ना, सही है सही है सही है। डैशबोर्ड किधर है? ये है ना असल में ये दो चीज़ें हैं, सेंडर रिक्वेस्ट है, और अगर मैं बॉर्डर यहाँ से रिमूव करूँ तो क्या होता है? ठीक है। और अगर मैं ऊपर से भी बॉर्डर रिमूव कर दूँ, यहाँ पर लगा हुआ था सेंडर रिक्वेस्ट में, ये वाला बॉर्डर अगर मैं रिमूव कर दूँ, और ये वाला बॉर्डर भी अगर मैं रिमूव कर दूँ, सही है। बस ये है कि टैब्स में ये था असल में, सेंडर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हैंडलर, ENV वाला किधर है? टैब्स है ना, इसके ऊपर H2 की हेडिंग दे देते हैं, H2 इन ENV वेरिएबल इन। सही है, यहाँ से अपने वो करो, चलो ये अब बेहतर हो गया काफ़ी मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू गाइस। आई थिंक सो कि मैं आज ही दोबारा स्ट्रीम करूँगा और इसी के ऊपर करूँगा, और फिर हम जो है वो लाइक URL वगैरह देखेंगे कि मैं कैसे उसके ऊपर क्लिक करके डाटा यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, क्योंकि साइड बार तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैम, लेकिन ये जो डाटा होगा ये हम जो है वो डिफरेंट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो पोस्ट आएगा, डाटा की रिक्वेस्ट होगी तो मतलब सारा कुछ वही चीज़ आएगी, और फिर इसके ऊपर भी काम हमारा जो है वो भी होने वाला है। अभी के लिए तो सिर्फ प्रेटी प्रिंट के साथ मतलब सिर्फ दिखाया ही हुआ है, लेकिन फिर हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग मी, इफ़